you took out the time to join us. I was actually personally very excited. I saw that you've chaired multiple MUNs. So I've been doing MUNs of someone from that part of the world. So thank you for joining us. Um, Third task for the Young Entrepreneurs Move. Our third task is it's more about how events, products, and I have encouraged social inclusivity in our life. And uh, we could deliver ideas to our Yemmers was to have you on board and tell us about your journey of Wall of Hope. Mamnoor mentioned it to us, like the internal team before, but we'd love for you to share your journey with our Yemmers so that they're inspired, because the next task that they will be doing is they'll be writing articles on social inclusivity. So we're just going to start. Everyone's joining in. So over to you, Sir Liza. Before he starts off, Zainab, sorry, your internet broke up in the middle a little bit. But before we make the introductions about Irtiza, so I've known Irtiza for years now, 7, 8 years to be precise, and I've seen his journey. We had met at a school, and then from there on, the journey started off where I've seen his career grow, mashallah, not only as a youth leader and somebody who's really, really enthusiastic about social inclusion, but he is you guys 5 years down the line, right? And me 10 years back. But I wish I would have been like him when 10 years ago. And he had this vision to, do something about, the changes that are affecting. So it is just to give you an overall picture. I know you know about the YEM. I know you and I have brainstormed on this a lot, and we keep, working on different projects together. But the whole idea of the young entrepreneurs movement was to get students come on board, like-minded people who want to do something out of the classroom and work towards, developing societies, अपनी communities को कैसे develop कर सकते हैं, और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती. And you are a real live living example of that. You started very young, and how I wanted them to experience the practical bit. The whole concept of the young entrepreneurs movement was to actually give experiences to all of the Yemmers, all of the fellows, about what real practical success stories are from Pakistan, so they can all start looking at कि यार ये कोई इतना बड़ा uphill task नहीं होता, अगर हम baby steps भी लें तो हम बहुत अच्छी contributions कर सकते हैं. So I want them to basically immerse in the Wall of Hope journey. How has your journey been like? What is it that inspired you? Where did that first thought? So this is going to be a memory for you, a travel down memory lane. So I'm so glad that you're gonna speak to them and share your story. So over to you. Thank you so much. Thank you so much, Noor. Really means a lot. And I'm seeing a lot of vibrant faces over here. And I really, really appreciate that you took out the time. That too on a Saturday when our youth doesn't do these kind of things. But I'm really happy. I really want to tell all of you that the first time Noor talked about Yam, I was there. I was lucky to be there in the initial drafts, and it has come so far. So, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to each and every one of you. And I hope that all of you are doing well and you are all excited for what's ahead. I'm going to keep it a reflection, then I'm going to share some of my tips and tricks with you, and then we're going to close it with some real good advices for you guys. In all of these things, you're going to figure out how things happen, and I'm sure if you have any questions, I would love to answer them at the end for you guys. So, there are certain moments in one's life that always humble you. And standing here today, I don't speak to you as somebody I believe who's made it, but I believe who's still building, who's still dreaming, and I think who has walked a long way
a very difficult path over the years, but I believe that where you are sitting today, I was sitting one day. I was there back in my time. So when I started, I need to tell you a few things. हमारे टाइम पे ना ये कल्चर नहीं होता था जो आज आपके पास एक्सेस है. You know, people like Noor, people like me, people, other people who are actually talking to you. So when we were there, we actually had a lot of problems. There were nobody to believe in. There was nobody to say, hey, well done, you have done it. We used to go to colleges, we used to go to universities, and we came out of it without anything substantial. So, I am getting old. I was born in 1994 in a very, I would say, middle class home. I knew very, very early in my life that I wouldn't inherit power or privilege because these were the things that were told to us at that time. They used to say, कि क्या कहते हैं, government jobs जो है ना, you all should go for, because there was a ready-made path for people like us. That is that you do your metric, you do your FSC, you do your bachelor's, and then you go into a sarkari university or a sarkari naukri, and that is it. uh, but here's the fun part, that I had multiple clashes with my dad over this, and I told him that no, we're not going to do this. We're not going to do the book that is written already. We're going to change and flip the script a bit so that we could actually create meaningful things for people over here today. And when I started, to be very honest, I did not knew whether that is going to be successful or whether that's not going to be successful. So, a little bit of story time. Back in 2017, I was in my seventh semester of my bachelor's degree. I've done a bachelor's in economics, and later I did a master's in economics also. So, at that time, the discussion in our class was always around three things: CGPA, jobs, and internships. And it always used to focus on that. Let me tell you one thing. I did not had a very good fancy CGPA. My CGPA was just 3.4, first of all. But what I had very good in my bachelor's degree was that I did 12 internships. And I was that kind of a kid who used to say to my instructors, कि भाई ये मुझे साथ बिठा लो, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम. I tell you a funny story. When I was in my fourth semester, so my dean was exiting his office one day. And I was sitting outside his office, and he told me, why are you sitting here? The classes timings are over. And I said that this might be very naive for you, but I really want to intern with you, and I don't want to go back to home for summers. He looked at me, gave me a weird face, and he said, okay, we're going to talk about it in the morning tomorrow, inshallah. Next day, I got called into an office, and he said that these are summer vacations. Why aren't you going home? I told him that I'm in hostelite A. Secondly, I've known my family a lot. I know what the mantra is, how it's going to go. So he's like, what do you want to do with it? So I told anything and everything that you could teach me. He's like, fine. Those 3 months I remember were very transformational for me. He taught me each and everything how a university works, like how to approach visiting faculty, how to timetable things, how to reach them out on emails. I was so dumb and naive, guys. I'll tell you, I didn't knew how to write an email. I used to start with, "Hey, how are you?" And my dean always used to say to me, never you have to write. You have to write greetings, how are you? Or something more formal lines, a formal tone. And he used to reject my emails every time, and he used to say again, again, again. So those 4 months were a very, very interesting time. And by the time I reached seventh semester, uh, I used to live in a hostel. It used to be an army hostel, and I used to live there. And one day I asked myself this question, that Irtaza, you have now been rejected by 13 youth organizations. You go every day to every organization, and they tell you कि भाई सीट नहीं है, जगह नहीं है, अच्छा नाक लंबी है, कद लंबा है, कान बड़े हैं. You know, all those stereotypical things that used to happen back in our time. I'm going to name an organ. Isaac का आप सबको पता होगा क्या कहते हैं. So Isaac वालों, they once asked me. I reached there ना final stage पे मैं पहुंच गया. ठीक है, मैम नूर ने कहा नाम भी चलो मैंने ले ही लिया है. तो अब I reached the final interview of Isaac. You know, उन्होंने मुझसे एक सवाल क्या किया? After clearing all the things they asked me, said "Tirza, आप हमें बताएं." I was very excited. I was like, पता नहीं कौन सा $1 million question. They asked me कि ये जो गटर होता है ये गोल क्यों होता है?
I told them, भाई मुझे क्या पता, मैंने कभी बनाया नहीं है ना लगाया है, ठीक है? And that was the first and the last time I ever went to Isaac. So I got rejected from Isaac multiple times. So when I was in my semester of my university, when everybody, was worried about CGPAs, I decided to launch Wall of Hope. And initially, Wall of Hope was something of a very unique concept inspired by Diwali Mehrbani. If you guys remember, people used to send off their clothes and all these used things at a Diwar. And the first Diwar was right besides my home. And I used to go and send my stuff over there too. Ke bhai, koi le le. And from there, we created Wall of Hope. And Wall of Hope, interestingly, let me tell you, it had no funding, no finance, nothing at all. Since I was in a dorm, I used to live in a hostel. I went to the dorm and I actually printed a paper and told everybody that registrations are open. Could you be a part of it? So there were 42 dorms in our hostel, and 41 of them said no. There was one of them who said yes. And then he still is a member till date. 8 years after, he's still a part of the organization. And you might have heard, guys, that in your journey right now, your parents, and for all the right reasons, they want your career to be nice, very stable enough. They'll say that focus on your studies, get a stable job. Then CSS is one of their favorite things. They are like really inspired by it. ठीक है, उसका भी जिक्र होता होगा. But eventually, and this might sound the most cliched of the things, as they say na, I had a voice in me that said ke, you need to make it happen. तो चलो अब तुमने बना तो लिए, now you need to do it. Over the years, now I'm going to share certain of the things जो कि आपको बताएंगी कि how capacity building actually happens. Because if you're going to read it in some article, if you're going to read it in somebody's speech, if you're going to, watch YouTube tutorials out of it, it's not like that. It has to be you who has to be at the forefront. It has to be you who has to actually genuinely experience it. And if you're not experiencing it, it means you're not made for it. Okay? So it's important that you find the flavors in yourself. What happened was this, that I went to some of Pakistan's biggest educational institutes. Ma'am Noor knows this. And a part of my urge was always to learn, relearn. आप यकीन करें कि I was so interested and so consumed with the concept of this learning that I used to apply hysterically everywhere with the belief that, I'll get somewhere in, I'll contribute meaningfully somewhere. So I've worked with Beacon, I worked with City, I worked with NCUK, I worked with University of Bolton. And on all of these things, I got a flavor of something. The flavor was to give back, to create opportunities for people like you. And आप लोगों ने अपनी society में देखा होगा, people like Amara, Bilal, Zainab, Anaya, Iram, that there are very few people in our society that are willing to create opportunities for others. You won't find many creating those. Why? Because it takes a big, 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 big gut and a big, big, big effort to actually do that, right? So it's very important that you are the ones who are the doers, right? Uh, Today, as we speak, Wall of Hope is in 40 plus universities. It's across all the provinces of Pakistan. Just last month, when Ma'am Noor was also a part of it, we hosted Pakistan's largest virtual internship program. We have around 300 plus alumni that are very, very proud of the work that they are doing. They're representing Pakistan at multiple initiatives, multiple very good initiatives. And these are, frankly speaking, kids, these are not just numbers. They're very dreams. ठीक है, हर बंदे की dream है जो किसी ना किसी जगह पे fulfill हुई है. Today, you're part of the Young program. I really hope that one day me and Ma'am Noor would be sitting to see the 10th cohort, inshallah. And then by the time the 10th cohort would be there, the first and second ones are going to obviously reflect back कि हमने क्या सीखा, हमने क्या develop किया, किस तरीके से चीजें हमारे लिए enhance हुई. So first thing first, I really want to, okay, she's playing this. This is a very emotional moment she has played, by the way. I tell you before I go forward, this was the time when I actually got the youngest presidential award for social work in Pakistan. I'm actually the youngest who got it at the age of 22. So that was a time. This is a time when I met the
Prime Minister a few months back. I was among the 10 only people from Pakistan that met him as part of the social work when we were being recognized. In the last picture that was there in front of you, we were being recognized by NUST University. This is me blabbing around like I'm doing it with you guys. Most of the time I do it. So this is where Volofolk completed its 6th year. So now I'm going to tell you certain things that I really want you to note it down. And whenever you come across with me in life, I hope that you remember that, because these are the things that have helped me grow. And these are the things that I think are going to help you grow because I deeply and passionately believe in them. First off, kids, you need to understand build when no one is watching. सोशल मीडिया डज नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है? आप बेशक जब कोई चीज बना रहे होते हो ना, तो उसको अपने तक रखो, ठीक है? अपने क्लोज सर्कल तक रखो, हर चीज को एकदम बाहर नहीं पोस्ट करना, ठीक है? जब तक वो अपनी एक रॉ फॉर्म में नहीं आ जाती, रियल फॉर्म में नहीं आ जाती, डेवलप नहीं हो जाती, ठीक है? I tell you from my experience, a lot of my impactful work always happened when there were no cameras, there was no applause at all, and there were no people to say कि यार तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, यार ये तुमने कैसे, कीड़े निकालने वाले लोग नहीं थे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का एक सबसे बड़ा असूल ये याद रखिएगा, वो ये होता है कि इफ यू बिलीव इन समथिंग, डू इट साइलेंटली, so that you know where you are, right? You know what you're doing. If you're going to tell everything out there before the time comes, that noise is going to distract you. ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू। फिर आप हर एक के ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। मिसाल के तौर पे जैनब कुछ बना रही है और लीना जो है उसको लगता है वो ठीक नहीं बना रही, फिर ना कहेगी यार ये बड़ी तुमने किस तरह का बना दिया है, तो जैनब विल गेट कंफ्यूज्ड। So a lot of my success happened because of the fact that I believed in it, I did it, and when there was a time to show it, I showed it off. Got my point? So it's very important to see what when we're doing the real, tangible, constructive work, a lot of people should not be there. It should be you, your thoughts, your hard work, and your dedication. Second cheese jo hai na, this is very personal to me. But I believe that it is something very realistic in today's time. Never ever outsource your dreams. Kabhi bhi nahi. If you believe in Wallafo, if you believe in Tutify, if you believe in Mindworks International, if you believe in YEM program, you're always going to show up. You're always going to be there. You're always going to make time for it. You're always going to make an effort for it. No matter how big of an event is or how small of an event is, you'll always be there. You'll be the first one to reach the event. और ये याद रखेंगे आपकी लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ के हवाले से भी और आपके क्या कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिहाज से भी. Let's say you're a leader, you're a CEO. And if you're not the first person to be there, what's the point? Right? Because people are going to follow you. They're going to take your example for anyone else's example. So हमेशा अपनी लाइफ में 10 to 30 minutes का margin रखें. See के how, because uncertainties always arise, ठीक है? Uncertainties हो सकती हैं, traffic delays बहुत कुछ हो सकता है. But remember, you're the one who's going to actually make that ship sail. So अगर आपके अंदर problems हैं, let's say आप job करते हो, अब जैसे मैं भी job करता हूँ, ठीक है? मेरी जॉब का टाइम 7 to 2 होता है. 2 o'clock के बाद I do not even see a word what my workplace people are doing because that is the time for my NGO, my startups, etc. So मैं उधर नहीं जाता, ठीक है? So always, 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 you are the one who's going to believe in your dreams. Never outsource them. Nobody. वो जितने ही क्या करते हैं हमारे सारे मार्केटर्स, ये बाहर से लोगों को हायर कर लेते हैं ना. वो कहते हमने एजेंसी हायर कर ली जी, अभी हम एजेंसी से चलाएंगे. एजेंसीज कभी सक्सेस नहीं चलाती, याद रखें. आज तक मैंने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई एजेंसी हायर नहीं की. वजह, बिकॉज जब आप एजेंसीज हायर कर लेते हो तो क्या होता है दैट इवेंचुअली दे आर गोइंग टू डू थिंग्स देयर वे, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट योर वे. मैम आप कुछ कहना चाह रही थी? It's just enjoying this so much because I think इतना detailed मैंने भी आपके साथ कभी नहीं बैठी कि wall of hope की journey. I know what's it about, but um I thought that I'll ask you questions that were coming in my head, and I'm pretty sure कि बाकी लोगों के भी दिमाग में आ रहे होंगे. So feel free if you wanna come off mute and ask a question. But I wanted to ask you कि इतना इसके अंदर it's such a passion led
प्रोजेक्ट। देखें, जब हम कोई भी काम फिलैंथ्रोपी के लिए कर रहे होते हैं या हम किसी सोशल इंक्लूजन या मूवमेंट के लिए कर रहे होते हैं, आई नो फ्रॉम अफ्तार ड्राइव्स टू going to underprivileged schools and teaching them, providing them with good quality education, आप यूनिफॉर्म अरेंजमेंट करते हैं, किताबों की अरेंजमेंट करते हैं, बच्चों की जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, फिर उनकी फीसेस को एस्टैब्लिश करना, the entire charity का process चलाना, that comes with a lot of faith and belief that people have in you. So Yeah. when you were starting, क्या आपके दिमाग में ये बात आई या ख्याल आया कि यार वो पहला बक जो मैंने डालना है, राइट, वो कहाँ से आएगा, वो जो पहले फंड्स हैं वो कैसे जनरेट करेंगे, एंड व्हाट वाज इट दैट वाज गोइंग थ्रू योर हेड व्हेन यू वर डूइंग दैट फर्स्ट ड्राइव? बिकॉज as I understand in a philanthropic setup, it is अगर पैसे नहीं होंगे तो आप उस बेनिफिट को Yes. कैसे लोगों तक लेके जाएंगे? तो what was your experience of doing it? And then how were you able to scale that entire process? I think ये बहुत जरूरी है, if you can share your thoughts Yeah. on it. So I would love to. बड़ा अच्छा सवाल पूछा. So basically अभी मैं आपको मॉडल भी समझाऊंगा, बट जब पहला सवाल मैम ने पूछा ना कि पहली डोनेशन हमने किस तरह की थी, तो we were two partners, guys. Um, it was me, and then there was Ikra Fayaz, who currently resides in Germany. She's still a board member of our organization. So what we both used to do was कि हम अपनी pocket money से contributions किया करते थे. I can share with you, I used to get 11,000 PKR for my hostel expenses and university expenses back then. And then out of that, I still remember 4K was fixed for my hostel kind of things, like my eating and my traveling. Around 2 to 3K was around for entertainment. That's around 8K. And rest 3K was always spent for Volvo, that I really wanted to, contribute in any way possible, because I always believed कि जब तक मैं show up नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा, लोग कहेंगे कि यार ये तो इसने हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो हमसे मांग रहा है, हम क्यों दें जब ये अपनी जेब से नहीं दे रहा? बिकॉज फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी एक्टिविटी गाइस इज ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट वो ही बंदा लेकर आ सकता है who stood up for it. So it was me and Ikra who used to actually give all this money first in. And then when we started growing, our events got started, getting a bit of publicity. फिर क्या होता है? फिर this is the interesting part. Then I started doing a lot of, you can say, freelance work in my university. And I used to be very exploitative at that. What I used to do, I used to tell my friends, भाई बनाना है अपना project, अपना thesis बनाना है, आ जाओ मेरे पास. I used to make people's thesis, I used to make their reports, and I used to charge a good deal of money from it. From there onward, that money used to be channelized for Wallofo, for its events, for its banners, for its designers, for the pamphlets that we used to spread. And I used to calculate every cost. Like, for example, I used to put myself in. Let's say I am the founder. I'm going to go at an event. How much the Kareem is going to cost? Let's say 400 rupees, right? Then that cost should come from Wall of Hope. It should not come from me, because I'm spending and giving my time for it. Eventually, as we grew and grew and grew, I was the first person in Pakistan's social sector that went to the FBR for the very first time ever. I went to the FBR and I told them that we have done this Ramadan drive. I still very well remember that Ramadan drive was for 30,000 rupees. We had all the receipts with us. And the Chiprasi at the FBR door told me, भाई साहब क्या करने आए हैं आप? And I told him कि मैं अपनी रसीदें जमा कराने आया. And he started laughing. He's like, भाईजान यहाँ कोई जमा नहीं कराता, ये पाकिस्तान है, आप किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं? I was like, can you connect me with the person? Then we went, I still remember, third floor FBR office, and we set up our account over there in the non-profit charities. And they said that you're the first guy over here who brought all the things. So 30,000 से हम शुरू हुए. अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ. इस साल रमजान में हमें 30 लाख की डोनेशंस आई हैं. 30 लाख कहना आसान है. 15 शहरों में हमने रमजान ड्राइव की एक साथ. 15 शहरों में कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल. और 30 लाख की भी हम रसीदें लेके जमा करवाते रहे. तो कहने so people like us always wanted trust to be there. So what happened if I used to put any status on my WhatsApp, and people used to donate? Let's say Zainab ने मुझे 100 rupees donate किए, ठीक है.
मेरा केस कंप्लीट हो गया, आई एम हेल्पिंग समबडी. After when the case was complete, every receipt used to be on my status. It used to go to that person. It used to go to that, a guy who has actually donated money. So people then started trusting us a lot. Even Ma'am Noor, frankly speaking, to till day, she is a part of a lot of our initiatives. Sometimes she sees a status, she responds back, she sends money. So at this stage, we have, I would honestly and proudly say, mastered the art of trust, to be very honest. So that when people, I tell you another example. There was a kid in Qaid-e-Azam University. See the power of hope. The word hope, you're going to see how this hope reflects and transcends. So his father actually got paralyzed, and he was in his fifth semester, and he had a amount of around 90,000 PKR, and nobody was helping him. So we took up his case, and I told him initially, this is like 90K is a big amount. How can we do it? So he said, no, 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 you can easily do it, sir. I have a lot of hope from you. So we put up a status, and by God, I tell you, in 20 minutes, his case got completed. There were two donors from the United Kingdom who took up the case and who gave the money to him. He submitted the money the next day. He sent us the receipt. And, I still remember his message, and his message was very simple. He said, wherever in any room your name would be taken, I'll be the first one to vouch for it. And I've never met him in my whole life. Never. Till date, I've not met him. So as we speak, I was telling you the tips. The second tip, third tip I really want to tell you, and ये आज आपने करना भी है. I learned this from मैम नूर. ठीक है, मैम नूर ने मुझे बहुत पहले सिखाई थी, तो मैंने इसको अपने लाइफ में बहुत इनकॉर्पोरेट किया. योर डिजिटल प्रेजेंस इज एवरीथिंग. नेवर नेवर टेल पीपल, हाँ भाई मैं तो बस वो ये लड़कियां और लड़के, हाँ नहीं मैं तो कर, हाँ नहीं मैं कर लेता हूँ यार. यार कभी गरूर नहीं किया. बस गरूर करो, लगाओ. ठीक है, जो काम किया उसकी ओनरशिप लो. ठीक है, अगर आज तुमने ये सेशन अटेंड किया मेरे साथ, मैं अभी कहता हूँ इसकी एक पिक्चर लो और स्टेटस पे लगाओ, और क्या कहते हैं लिंक्डइन पे लगाओ. आई विल बी द फर्स्ट वन टू लाइक एंड कमेंट एंड रीपोस्ट इट. क्यों? बिकॉज योर डिजिटल प्रेजेंस इज योर ग्लोबल पासपोर्ट. लोगों को नहीं पता चलता आप कौन हो. किसी को पता है आज के इस यम के सेशन के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं? किसी को पता है कि आप कौन हो? मुझे पता है ना आप कौन हो. आपने दुनिया को बताना है कि आप कौन हो. ठीक है, सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमारी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इनहैंस हो. ठीक है, वो इंक्रीज हो, उसको हम डेवलप कर सकें. और अगर हम उसको तब तक डेवलप नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए ओनरशिप नहीं लोगे. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मुझे बताओ? यू विल बी शाय. ठीक है, आपको होगा मैं पोस्ट किस तरह लिखूं. ठीक है, उसके अलावा आपको ये होगा कि क्या कहते हैं, अब लोग क्या कहेंगे. फ्रैंकली स्पीकिंग, जस्ट डू नॉट केयर अबाउट इट. आपको क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे. ठीक है, व्हेन आई वाज इन बीकन हाउस, टेल ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, देयर वाज अ हेड ऑफ माइन हु ऑलवेज यूज्ड टू से, तो इतने अच्छे इवेंट्स करते हो, लिंक्डइन पे क्यों नहीं लगाते हो? सो मैम क्या लिंक्डइन पे क्या लगाना है, लोग कहेंगे ऐसे शोखा हो रहा है. लास्ट नाइट आई हिट 19,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन. तो फिर शोखा होना पड़ता है, लगानी पड़ती हैं चीजें, लोगों को पता चले. इट एक्चुअली डेवलप्स योर प्रोफाइल. एंड याद रखें, आज के दौर में नो वन इज गोइंग टू वॉच योर सीवी. दे विल नॉट. मैं आपको ट्रस्ट में अभी बता रहा हूँ, कोई आपकी सीवी नहीं देखेगा. ठीक है, मैम भी नहीं देखती, मैं भी नहीं देखता. अलबत्ता मैं लोगों का लिंक्डइन जरूर देखता हूँ. ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू आर देयर विद योर डिजिटल प्रेजेंस. जैनब ने आज इस इवेंट को क्या कहते हैं स्टार्ट किया. मैम ने बोला कि क्या कहते हैं, आई वांट, जैनब आप स्टार्ट करो. जैनब ने किया ना, तो जैनब अपने लिंक्डइन पे लगाए कि भाई आई वाज द ओपनिंग पर्सन फॉर दिस सेशन. ठीक है, आई ओपन दिस इज गोइंग टू ओपन डोर्स फॉर यू. फाइनली, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डोंट जस्ट नेटवर्क गाइस, यू हैव टू बिल्ड कम्युनिटीज. नेटवर्किंग क्या है? मैं आपसे नेटवर्किंग कर रहा हूँ, आज मैं आपसे गपशप लगा रहा हूँ. ठीक है, बड़ी डिजिटल अच्छी हमारी गपशप चल रही है. थोड़ी देर आप बड़े इंस्पायर होंगे, 20-25 मिनट आपको लगेगा सर इर्तजा तो ऐसे हमारे जिंदगी में आए, वो सारी ना आपको वेव्स नजर आएंगी, हो मैम नूर ने ये कर दिया, बड़ा अच्छा लगेगा. 30 मिनट बाद आप क्या कहते हैं जाके जब स्पॉटिफाई ऑन करेंगे, गाना सुनेंगे, आपको मैं भूल जाऊंगा. आपको होगा वो आया था गया. ठीक है, सो बिल्ड कम्युनिटीज. कम्युनिटी बिल्ड करने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को यूज नहीं करना होता. कॉन्टैक्ट्स कभी काम नहीं आते जब तक कॉन्टैक्ट्स आप पे ट्रस्ट नहीं करते. कम्युनिटीज ट्रस्ट के साथ बिल्ड होती हैं. मुझे अच्छी तरह याद है, आई यूज्ड टू वर्क एट अ प्लेस
and me and Mamnoor used to equally hate that place. It was a place where we bonded. ठीक है? And eventually from there onwards, we did some of the amazing work out there. हमने पहला पहला NCUK का cohort बनाया था पाकिस्तान में. We brought in like 15 foreign speakers जिन्होंने digitally लोगों से बात की थी. एक प्रोग्राम बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, ट्रस्ट डेवलप किया. ठीक है? फिर इतने इवेंट्स पे एक दूसरे को इनवाइट किया. इट्स नॉट जस्ट कॉन्टेक्ट्स. मुझे पता है मैम कॉन्टेक्ट्स में है मेरे. ठीक है? लेकिन ट्रस्ट बिल्डअप हुआ. और वो ट्रस्ट इतना बिल्डअप हुआ कि इवन इन द मोस्ट पर्सनल ऑफ द टाइम्स वो ट्रस्ट आपके हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू सर्व पीपल सिंसियरली. अगर मैं आज आपको थोड़ा सा धोखा देके चला जाऊँ ना, बोलूँ कि यार हाँ मेरी बातें तो इनको अब समझ आ गई होंगी, बस इतना जल्दी जल्दी करो, अगले सेशन के अंदर भी तुमने जाना है. दैट्स नॉट सिंसियरिटी. That is just killing time. So whatever you do, in whatever community you are, whatever initiative you're a part of, remember what is expected from you. आपसे क्या expect कर रहे हैं लोग? आपको यहाँ मैनिक्विन की तरह तो नहीं बिठाना ना हमने. ठीक है? कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ना हमारी आपसे कि आप मुझसे सवाल करो, हैंड रेज करो, पूछो. ठीक है? तो always, always, always serve people and the programs around you sincerely. And finally, जब आपके अंदर ट्रस्ट होगा, सिंसेरिटी होगी, तो आप अपने मिशन को आगे भी लेके जा सकते हैं. लेट्स से आप भी अपने साथ सिंसियर नहीं है. ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपको लगता है यार हाँ ठीक है आज मेरी पिक्चर लग गई है पेज के ऊपर, सेशन हो गया है, 20 लाइक्स आ गए, अब कल तो मैं आराम से कुछ और करूंगी, कुछ नया ढूंढूंगी. नो, सेलेक्ट वन थिंग, देन टेक दैट थिंग फॉरवर्ड, वरना कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है? अगर आप 10 चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे, एक भी चीज सही से नहीं कर पाओगे. And then obviously, anybody has questions, please ask. No, I wanted to actually. It's really inspiring, Irtiza, and thank you so much for being so open and sharing के challenges क्या हैं, फिर opportunities क्या हैं. मैं आपकी जब आप बात कर रहे थे तो ये diagram मेरे दिमाग में आई, and I thought that I'd quickly pull up because one of the conversations that I've been having with all of the YMers this time around is कि देखो भूमिका will be Bhumika will be working for someone, Bilal is working for an organization, वहां पे वो कोई भी अपना उसका जो रोल होगा वो होगा. बट जो ओनली कांस्टेंट होता है वो ये होता है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड अप होती है, Yeah. राइट? एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन stays and sticks with you forever wherever we'd be working. It would have changed, 5 jobs the last 5 years, right? Which is true. I'm telling you a True, true yes, uh, truest, truest. true true statistic here. But he will always be the founder of Wall of Hope because that's his baby. He'll always be a founder of 2 to 5, which is working on inclusive education. O levels, A levels के बच्चे जो afford नहीं कर सकते to pay really high fees. How can they work in a peer tuition system and make qualifications like OA levels inclusive? तो ये जो construct मैं आपको सबको दिखा रही हूँ, उस पे ये सारी चीजें जो इर्तिजा बोल रहे थे वो बड़ी फिट होती है. सोशल वैल्यू, द वाइडेस्ट सर्कल, विच इज के लोगों को जो सफेद पोश होते हैं उनको वाकई में हेल्प चाहिए होती है किसी ना किसी ऐसे इदारे की या ऐसे स्ट्रक्चर की कि जहां से वो रीच आउट कर सके, राइट? दैट इज द मेन बेसिक पर्पस के हाउ आर वी हेल्पिंग कम्युनिटीज इन मेकिंग देम मोर इंक्लूसिव. Then we speak about, yes, social innovation, social entrepreneur, the person behind the thought, because कोई भी race जो है वो without a jockey win नहीं कर सकता. So the social entrepreneur, the person, he or she himself who's doing the talk and putting the words in front of people, which you are going to do also very soon as part of your pitch deck. Understanding what the market wants, market essentially the community, और फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी है, द रीजन आई वाज उसकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द रीजन आई शोड यू इंस्टाग्राम पेज ऑफ वॉल ऑफ होप वाज, चाहे वो बलोचिस्तान में वॉल ऑफ होप की किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन हो या चैप्टर हो, या सिंध में हो, या वाह में हो, या गिलगित में हो, या
पूरे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, the call is open for cohorts, communities. They become a part of this umbrella organization, and that is something which is equally branded wherever they are. Irtiza is not traveling to Gawadar or to हाँ Quetta or to Wah or to Gilgit, right? He is based in Islamabad. बट उसकी जो पावर है उस आइडेंटिटी की, उस एक सोशल कॉज की, दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्केलेबिलिटी, कि वो जहां से भी आते हैं. आई एम श्योर इट इज यू डोंट सिट अराउंड एंड यू डोंट डू योर एनुअल रिपोर्ट्स every year and say, oh, I met 10 kids of Wall of Hope. No, he says I met thousands, right? Because सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, और वो फिर इम्पैक्ट है जो जनरेट होता है, which attracts that trust, which attracts या the scalability bit of it, right? या So I think you and I should pause, otherwise we can keep talking. But मैं if you यहाँ ये बताना have चाहूंगा कि questions, स्केलिंग वाला पार्ट मैं थोड़ा सा कर लूँ, थोड़ा सा हाँ, इनको बता दूं और please इम्पैक्ट please वाला please. बता दूं, ताकि फिर ये सवाल पूछो। और आप लोगों ने मुझे डांटना नहीं है, क्योंकि यकीन करें, क्योंकि अभी ना मुझे दरमियान में मेरी एक टीम के बंदे के मैसेज आया, इज लाइक सर आप प्लीज 9 बजे क्लोजिंग के 2 रिमार्क्स दे दें हमें, तो आई वुड लव कि मैं आप लोगों के साथ टिल 9 सारा वाइंड अप भी करूं। No अच्छा, worries, हाउ no हाउ worries. डिड वी स्केल इट अप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये एक, इट्स नॉट लाइक अ स्केलिंग अप, इट्स लाइक अ मंत्रा। सो याद रखें कि जब कभी मैं किसी 5 बच्चों के साथ सेशन किया करता था ना, तो मैं 5 बच्चों को हमेशा कहता था कि अगले 10 को तुम ट्रेन करोगे। हमें शक्ल देखा करते थे विद हैरत ज़्यादा आंखें, एंड दे यूज्ड टू से कि हम कैसे करेंगे, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम कि जैसे मर्जी ये करना है करो। सो फ्रॉम 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है, आपको अगले बंदे को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और याद रखें, स्केलिंग के दो ही तरीके हैं। आप तब तक स्केल नहीं कर सकते जब तक आप लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते। हमने हमेशा लोगों पे इन्वेस्ट किया है, कभी प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं किया। आप अब हमारा पूरा इंस्टा उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट्स हर साल नए हो जाते हैं, लोग हमेशा वही रहते हैं, लोग 3-4 साल से वही हैं। तो उन लोगों की जो जर्नी है ओवरऑल वो काफी बेहतर हो चुकी है। दूसरी चीज ये, और ये आप लोगों के लिए भी है, एंड आई होप दैट आप लोग आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीजें करोगे, हमेशा टीम्स बनाना, टाइटल्स मत बनाना। टाइटल तो किसी को भी मिल जाता है, ठीक है, टाइटल तो आज मैं मैम नूर को 10 दे दूं, मैम नूर मुझे 5 टाइटल्स दे दें, लेकिन जब तक आप टीम्स नहीं बनाओगे, वो टीम्स आपके विजन पे नहीं चलेंगी, तब तक आप उनको स्केल अप नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ फेमस एग्जांपल्स बताता हूँ हमारे इम्पैक्ट की। हमारी एक लड़की थी गिलगित से, जिसका नाम था सकीना। वो अपनी कम्युनिटी की सबसे पहली फीमेल पब्लिक स्पीकर बनी। वो वॉल ऑफ होप जीवी की 3 बार प्रेसिडेंट रह चुकी है, सबसे पहली स्पीकर अपने एरिया की। एक लड़का था तुर्बत से, जिसका नाम था इमादुद्दीन, ठीक है, वो इवेंचुअली अब 3 से ज्यादा यूथ प्रोग्राम्स लीड कर चुका है बलूचिस्तान में, और हमारा पहला प्रेसिडेंट था बलूचिस्तान। आज तक 3.2 मिलियन इन स्कॉलरशिप्स हम दे चुके हैं ओवर टू किड्स दैट केम टू ट्यूटिफाई, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे बाहर जा चुके हैं। एंड इवेंचुअली सबसे अहम तरीन बात कि देर आर 3 यूनिवर्सिटीज इन स्टेट्स, वन इज डिपॉल, वन इज सिएना, एंड देयर इज वन मोर, जिन्होंने प्रॉपर वॉल ऑफ होप को एज अ केस स्टडी अपने बच्चों के लिए सोशल साइंसेज में इंक्लूड किया। तो ये इम्पैक्ट कैसे आया? अगर ये झूठ मूठ का होता, वो आजकल डॉल आई हुई है ना, वो बड़ी फनी किस्म की डॉल है, क्या नाम है उस डॉल का, वो हर बंदा जिसके कवर्स बना के घूम रहा है, ठीक है, तो ये तो मिथ एंड थ्योरीज पे तो दुनिया चल सकती है, लेकिन रियलिटी जो है ना बड़ी पेनफुल होती है। रियलिटी के अंदर आपको बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, रियलिटी के अंदर आपको अपना टाइम देना पड़ता है। एंड आई मस्ट टेल यू कि कम्युनिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। बहुत से लोग कहेंगे यार बड़ा वेस्ट ऑफ, वो आमिर खान और अनुष्का शर्मा की मूवी थी ना पीके, उसके अंदर वो कहते थे वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप तब तक एक कम्युनिटी को डेवलप नहीं कर सकते, एक कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते, जब तक आप उसके लोगों को डेवलप नहीं करोगे। अगर मैं आपसे आज बात ना करता और मैं आपको कह देता कि क्या कहते हैं मेरी क्या, मैं क्यों आके बात करूं, ठीक है, तो यू वुड हैव फेल्ट कि ही माइट बी लिटिल एरोगेंट, अब तो इसने अचीव कर लिया सब कुछ। तो कभी भी नेवर गेट द पावर एंड फेम टू योर हेड। अगर कम्युनिटी डेवलप करनी है तो ऑलवेज बी हम्बल, ऑलवेज बी अ सर्वेंट, ऑलवेज बी समवन हु इज लिसनिंग। क्योंकि अब देखें, इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ।
आई एम अ पार्ट ऑफ द पीएम्स काउंसिल, आई हैड द प्रेसिडेंशियल अवार्ड, मुझे लगा मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, ठीक है, जो मैंने अचीव करना था कर लिया है। लेकिन नहीं, ठीक है, एवरी टाइम आई मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू और एनीवन एल्स, आई गेट टू नो सो मच जो मुझे पहला नहीं पता होता, जो मुझे था कि क्या कहते हैं मैं तो कर ही नहीं सकता, या मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। तो ऑलवेज 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 आपने अपने ऊपर होप रखनी है। एंड ये मैं हमेशा तमाम बच्चों को बताता हूँ, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेने लगा हूँ, एंड आई वांट यू टू आस्क मी सम वेरी गुड क्वेश्चंस। ऑलवेज लुक बैक ऑन योर जर्नी। मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ कि आज अभी आई विल बी 31 years old दिस ईयर, तो अगर आई लुक बैक एट दैट 22-year-old इर्तज़ा, तो व्हाट वुड आई हैव टोल्ड हिम, या मैं उसको क्या कहता। ये मेरे हर बच्चे के लिए मैसेज होता है। तो मैं हमेशा उस इर्तज़ा को भी यही कहता और आपको भी ये कहने वाला हूँ कि लोग आपको हमेशा ये कहेंगे कि सब इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैम को इतने लोग कहते थे कि आप यूके नहीं जा सकती, क्या करोगे यूके जाके, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू टेल यू इट्स इम्पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। एवरीबडी विल टेल यू दिस, दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर किलिंग योर टाइम, दैट यू आर टू यंग, टू पुअर, टू नाइव, वी हेयर दिस ना। गुर्बत का रोना तो हमारे साथ ही चलता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको बार बार लोग बताएंगे। सो आपने क्या करना है, वेरी सिंपली, ये बड़ा अच्छा मंत्र है एंड आई होप कि आपके लिए काम भी आएगा। सबसे पहले तो आप उनको देख के स्माइल करेंगे, ठीक है, सिंपल ही कर देनी है, बेशक फेक हंसी क्यों ना करो, लेकिन स्माइल एट देम, ठीक है। एंड देन clap for yourself. I've clapped for myself multiple times, ठीक है, unlimited times I've clapped for myself. And then you're going to go on to build what they'll one day call visionary. It was my dad, I tell you, telling you a very personal example. My dad always used to say to me, Fazul kaam kar raha. And it was my dad, when I got the presidential award, he told the whole village, he sent it on their WhatsApps, ठीक है। तो eventually it's you're going to be the one जो जिसके लिए लोग बाद में क्लैप करेंगे, करना चाहिए भी। जब आप अपने लिए नहीं करोगे, लोग भी नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है। एंड मैं अपने आप को हमेशा ना, उस वक्त भी एक बात कहता था, आज भी कहता हूँ कि दिस बेबी इज गोइंग टू राइज वन डे, एंड व्हेन इट डज, इट विल कैरी अदर्स विद इट, and it has carried so many people with it till now. With this, I hope that my journey helped you understand what capacity building is. It is you start, you build, you dream, you acknowledge, you put in the effort when no one else is doing it, and at the end of the day you reap the fruit. अगर आपको अपने किसी भी इनिशिएटिव से लेट्स से 10 रुपए भी आते हैं ना, क्लैप फॉर इट, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर है, उसको उसको हिस्सा देना है, ये नहीं कि सारे खुद ही खा जाओ, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक थिंग्स इन द राइट वे। आई रियली वांट टू हियर योर क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी प्लीज पूछे मुझसे। Go ahead, you guys. We have 15 minutes. It's I hope that's fine with you. Yeah, we have. So go ahead, ask questions. Whatever you wanna ask, you want to know the how of it. Do ask questions. And go And there ahead. is no right and wrong question. कुछ भी पूछना है, frankly पूछना, पूछ लो। हाँ, जैनब पहले, फिर भूमिका की तरफ आते हैं। I think we can let Bhumika go ahead. I would let the Yemers go ahead. Go ahead, Bhumika. Okay, भूमिका। Okay, so basically, question I don't know, but I want to ask that it's not always easy. I've had the experience of building one or like initiating it. But like there are always like different people you meet. Like some people probably don't agree with your opinion, or they are just like आप सही नहीं कर रहे or everything. They're always there to like demotivate you. But अगर बहुत अलग-अलग जगह के लोग हैं, so how do you like still become like humble enough, like or like a servant as you say, to like kind of say कि मैं ये community फिर भी build करूँगा या करूँगी, because it's not always easy to kind of like put your mind off and be like कि नहीं मैं तो कर सकती हूँ, because you kind of like self doubt yourself a lot of Yeah. times. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल we're humans, हमें हमेशा ये फील होता है, ठीक है, दैट इज वेरी ट्रू। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कोई फरिश्ते हैं या हम बिल्कुल हर बार पॉजिटिव ही रहेंगे। होता है भूमिका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर नॉट पीपल हु वुड लाइक यू। मेरे साथ हुआ भी है 2021 में। इट वाज 2:30 एट नाइट, अभी है, जस्ट गिव मी गाइस 1 मिनट, 1 मिनट है। अच्छा,
So the wife call was here. Acha, anyway, so what happens कि it's natural for us in 2021 रात के 2:30 बजे लोगों की creativity check करो. I was sleeping. तो मेरे कुछ 5 से 6 एग्जीक्यूटिव्स इन्होंने डिसाइड किया कि हम तो सर इर्तजा को छोड़ के जा रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं. 2:30 बजे मुझे मेरी सेक्रेटरी की कॉल आई. शी इज लाइक, सर 5 एग्जीक्यूटिव्स आपके छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने ग्रुप्स लीव कर दिए हैं. ठीक है, और बड़े लंबे लंबे मैसेजेस किए, ही इज नार्सिसिस्टिक, ही इज डूइंग नेपोटिज्म, ये ब्ला ब्ला ब्ला. अच्छा, माय आंसर टू हर वाज, मैंने कहा फातिमा रात के 2:30 बज रहे हैं, सो जाओ, सुबह उठ के बात करेंगे. शी इज लाइक, you're too chill about it. I was like, yes I am. आप यकीन करें, सुबह जब हम उठे 8:30 बजे, उस वक्त हमारे पास 22 प्रेसिडेंट्स थे पूरे पाकिस्तान. एक प्रेसिडेंट भी छोड़ के नहीं गया, सारे अपनी जगह पे मौजूद थे. क्यों मौजूद थे? बिकॉज वो विजन पे बिलीव करते थे. याद रखें, आपने हमेशा विजन पे बिलीव करना होता है. ठीक है, इधर उधर से बहुत लोग आएंगे, आपको कहेंगे, कुछ लोग आपके साथ बताए कभी इस वजह से भी आते हैं भूमिका कि उनको ना सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पिक्चर चढ़ानी होती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं लोगों के. उनको लगता है कि हमारा पोस्टर लग जाएगा तो बस हमने वर्ल्ड वॉर 3 जीत ली है. लेकिन ये याद रखें कि हर बंदा हमसे एग्री नहीं करेगा, बट दैट्स ट्रू. मेरे से बहुत से लोग एग्री नहीं करते, मेरे से बहुत से लोगों को बहुत इख्तलाफ है. लेकिन अगर मैं हर एक की बात मानना शुरू कर दूं, हर एक की राय लेना शुरू कर दूं, फिर मुझे पता ही चलेगा ना कि मैं तो बहुत ज्यादा डम्बो काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग हूं. जब टीचर्स नहीं कहते थे, इज इट डम्बो, वेक अप, मेरा लेक्चर सुनो, तो मैं तो उसी तरह का बच्चा बन जाऊंगा. रिमेंबर, लास्ट एक बड़ी आपको इंस्पायरिंग बात बोलूंगा. दुनिया में हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता. तो कभी कभी किसी से हाथ मिला के हाथ पीछे भी कर लेते होते हैं. ठीक है, किसी और से हाथ मिला ले होते हैं. ठीक है, टेंशन ना लिया करें. सो दिस इज हाउ, बट या समटाइम्स इट फील्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू जस्ट गो फॉरवर्ड. लोग आते जाते रहेंगे, कोई मसला नहीं है. बिलाल, देन इरम. You can hear me? Hello. या आई कैन. So, Assalamu alaikum sir, first of all. वालेकुम. And मेरा क्वेश्चन सर सबसे पहले तो ये है कि आपसे कि चूंकि आप एक वेल आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी देर से आप जो है ये काम कर रहे हैं. So in the initial times, for example, in initial 1 or 2 years, आप वर्क और जॉब को किस तरीके से लाइक जगल अप करते थे, किस तरीके ओके, से आप कैजुअल इन चीजों को करते थे? जस्ट बहुत बिकॉज अच्छा सवाल. आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्योंकि मैं भी अभी लाइक अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड हूँ. सो जस्ट आस्किंग अ फ्यू थिंग्स सो दैट आई कैन हैव सम यू नो आइडिया. अच्छा, इसका ना बड़ा एक मैंने जिस तरह किया है वो तो बड़ी खोतों वाला काम था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूज्ड टू एक्ट लाइक अ डंकी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूज्ड टू गो टू माय वर्क, देन आई यूज्ड टू डू ट्यूशन, एंड शाम को आई यूज्ड टू डू दिस. बट मैं I'll tell you this. अगर तो आपके पास फाइनेंसेस नहीं है ना, ठीक है, फॉर एनी ऑफ द स्टार्टअप्स और एनीथिंग यू वांट टू डू, देन डू जॉब. ठीक है, वो जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस वहां से ही आता है. यकीन करो, मैंने अपने दोनों इनिशिएटिव्स के लिए अपने सारे पैसे किसी फंडर से नहीं निकाले, अपनी जॉब से निकाले. मैं इसलिए जॉब्स किया करता था क्योंकि मैंने अपने प्लेटफॉर्म्स को सस्टेन करना था. आज भी करता हूँ. ठीक है, अ बिग पोर्शन ऑफ माई सैलरी इज ऑलवेज री इन्वेस्टेड इन टू माई इनिशिएटिव्स. लेकिन देन वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गिव सम टाइम टू योर जॉब. ठीक है, और उसमें इतना सेव करो कि यू कैन डू स्टार्टअप्स. आई एम रियली ग्लैड आई हैड अ वेरी वंडरफुल वाइफ. शी स्टिल वाज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि कब ये खत्म हो रहा है, योर एक्सीलेंसी. एंड आई टोल्ड हर कि अभी थोड़ा सा टाइम है. सो आई हैड अ वेरी गुड पार्टनर टू हेल्प मी. ठीक है, सो आई यूज्ड टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. लेकिन इफ आई विल गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट एडवाइस, बैलेंस इट. हर चीज का ज्यादा जो है ना बहुत बुरा होता है. ठीक है, इवन माई हेल्थ डिटोरिएटेड इन बिटवीन वेरी बैडली. सो नाउ आई रियलाइज क्या कहते हैं, गिव टाइम टू फैमिली एंड एवरीथिंग ऑल्सो. सो इफ यू डोंट हैव फाइनेंस, देन डू जॉब एंड री इन्वेस्ट इट बैक. ठीक है, ताकि आप वो बैलेंस मेंटेन कर सको. एंड इफ यू रियली थिंक यू आर नॉट अ स्टार्टअप वाला बंदा, तो देन इफ यू आर हैप्पी विद योर जॉब, तो कीप डूइंग दैट. मैं कभी लोगों को जॉब से मना नहीं करता या उनको ये नहीं कहता कि स्टार्टअप ही करो. एक बहुत ही बज़वर्ड बन चुका है. ठीक है, दैट व्हाटएवर सूट्स योर पॉकेट, जो आपको अच्छा लगता है वो कर. इरम, आपका वन मोर क्वेश्चन. थिंग, आई जी जी.
one more thing I wanted to add, just a quick thing कि मैंने वॉल ऑफ होप का जो है वो खुद इसको एक्सपीरियंस किया just because I was in UET Texla and Ah, my one of my friends were you can say a volunteer for wall of hope, I think. Wow. So that's why it was such a nice, you can say, uh, काम करने का जो तरीका है वॉल ऑफ होप का, तो उसमें कभी कभी आई मैं भी ट्रूली हैरान रह अप्रिशिएट जाता हूँ। कभी कभी दैट। मैं भी हैरान हो जाता हूँ कैसे बना लेते हैं ये लोग, बहुत तेज हैं आजकल के बच्चे। वॉल ऑफ होप, टेक्सला और वहाँ जो थी ना, हमारा सबसे पहली टीम थी और आज भी सबसे बड़ी या टीम है। जी रम। So thank you so very much for giving me the opportunity. So I hope my आवाज clear because there is an internet issue at my side. तो अगर मेरी कट हो रही है तो please just let me नहीं know. नहीं, इट्स फाइन, इट्स I'll फाइन। start with a story. And the story is कि मतलब पिछले साल जब like it was my birthday and जब मैं मतलब 22 साल की हुई और मैं सोच रही थी कि oh my god मैं 22 साल की हो गई और अभी तक मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। although उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी, बिल्कुल उसी साल मैंने ग्रेजुएशन की थी और मैं जॉब कर रही थी, बट वो चीज मेरे माइंड को पिंच करी थी कि मैंने कुछ नहीं किया। आपने अभी बात की थी कि ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आपने एक नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स की हैं। सॉरी मैं उस नंबर को मिस कर रही हूँ। सो मैं एक चीज सोच रही थी कि मतलब वेन एवर जब भी मैं इस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ अभी आजकल, तो मुझे वो इतने पैशनेट नहीं लगते। सो मतलब दे आर रियली वेरी एंगेज्ड इन सो मेनी एक्टिविटीज, सो मेनी फेलोशिप्स, इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर एक्टिविटीज, जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट, कह सकते हैं कि मतलब satisfy नहीं है। So what is the reason? Like you were very passionate about to do this, but nowadays like if we talk about today's generation, तो वो इतना कुछ करके भी कुछ कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। मैं Like इसका I'm definitely it's me. Then so ये मेरा पहला क्वेश्चन। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये कि मतलब nowadays I'm working on my own startup and like the idea is कि ठीक है I'm going to open my social media marketing agency and I'm working on all the things, लेकिन उसमें the thing is कि मतलब I am unable to trust others. Like how trust others? For example, मैंने अपना लोगो बनाने के लिए दिया अपने एक कनेक्शन को और मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी और मतलब then what I started doing कि मैंने अपना लोगो खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। And here I'm feeling मतलब कि कुछ ना कुछ मसला है। बेशक मतलब मेरा लोगो ठीक आई होगा, गेट इट। बेशक मतलब जो कुछ भी होगा, लेकिन still why I am trust? अच्छा, मैं And इसका this आंसर is देता हूँ। very मतलब big problem. We're And smiling, Iram, because we understand where you're coming from. And trust me, whatever you're going through, sweetheart, it has happened to us. मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि आज की हाँ, जनरेशन, वो जैसे कहते हैं ना कि शाहरुख खान वाज द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स, तो ये अच्छी जनरेशन जो गुजर चुकी है हमारी वाली थी। नो ऑफेंस टू यू गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, आपके पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। मैं तो कभी कभी अपने स्नैप कॉन्टेक्ट्स को भी यही कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत अंधेरा है, अंधेरे की स्नैप्स भेज के मेरा टाइम वेस्ट ना कीजिए। तो द फर्स्ट टाइम द थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इज दिस कि इट्स फोकस नहीं है आजकल, इसीलिए लोग ज्यादा पैशनेट नहीं है। लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लोगों के पास रास्ते बहुत ज्यादा है, हमारे पास नहीं थे। हमने एक ही रास्ते को बिल्डअप किया, उसी पे हमेशा रहे, ठीक है। आज रास्ते बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ये जो आपने सवाल पूछा ट्रस्ट वाला, इस पे मैं आपको जवाब दूंगा, मैं भी नहीं करता आज तक। वॉल ऑफ होप के जो इंस्टाग्राम के पेजेस की एक्सेस है वो किसी डिजाइनर के पास नहीं है, कोई मैं खुद पोस्ट करता हूँ, बस मेरे लिए बहुत डियर है, मैंने बड़े प्यार से बनाया है, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर आप सब पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको बहुत लोग कहेंगे ये बड़ा हलूसिनेटेड काइंड ऑफ इंडिविजुअल है। तो छोटी छोटी चीजों पे लोगों से ट्रस्ट करें, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं करेंगी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, कहीं ना कहीं तो ठोकर लगनी है ना। ठोकर नहीं लगेगी, सब कुछ बिल्कुल सही होगा तो आप नहीं कर पाएंगी, समझ रही हैं। कहीं का ट्रस्ट करें, थोड़ा सा करें, फिर देखेंगे क्या होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, इफ यू आर द मास्टर ऑफ ऑल, यू डोंट, ये वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। तो ये नहीं करना। exactly. Nowadays, I'm working on this thing. Another question I have to the entrepreneurs, definitely you guys are sitting at front of me. That is कि मतलब there are so many people around me. अभी तक मैंने अपने business की like uniqueness नहीं find की, ठीक है? And I don't know, like you guys can guide me कि मुझे अभी से find करनी है, so I can, या फिर ये हो सकता है कि ठीक है मैं
जैसे जैसे आगे जा रही हूँ, I can find at that stage. क्योंकि जैसे मैं जैसे पिछले आगे 6 महीने जाएंगी से उसी अपनी तरह इसी आपको यूनिकनेस में मिलेगी, क्योंकि स्टार्ट में आपको हर चीज ही यूनिक लगेगी। आपको मुझे तो आज भी वॉल ऑफ पूरा का पूरा यूनिक लगता है, लेकिन उसके यूएसपी 5 ही हैं जो मैं लोगों को बताता हूँ। तो दैट ऑलवेज वेरीज। अब आई एम रियली रियली सॉरी मैम नूर, but I am actually getting like a plethora of messages, and I have another event coming up in just 3 seconds. I just want to say 3 things to you guys. First of all, firstly, my doors are always open to you. कभी भी प्रेजुडिस के साथ कि मैं क्या सोचूंगा ये सोच के मुझे मैसेज ना करिएगा, हमेशा मैसेज करें। जो हेल्प चाहिए लें मुझसे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सेकेंडली, अपने ऊपर बिलीफ रखें। बिलीफ इज द बिगेस्ट पावर, उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपने ऊपर बिलीफ रखेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। तीसरा और सबसे, ये बड़ा थोड़ा रॉ किस्म की एडवाइस दे रहा हूँ, बट नेवर हर्ट योर पेरेंट्स। दे नीड टू बी अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, अगर आज अच्छा नहीं लग रहा तो कल लग जाएगा। ठीक है, लेकिन have some faith in them and have some faith in you. Let's have a group photo. Let's Yeah, do a group very photo. quickly. Thank you so much. I'll keep talking. Guys, thank you so much, Irtiza. This has been wonderful. Thank you for taking our time and for being blatantly honest. That's why we love you so much. But thank you so much, everybody. Group photograph quickly coming up at the count of 3, 2, 1, because then Irtiza has to rush. Okay, the first one is done. Any more takers? Okay. All right. The second one. All righty. Thank you so much, Irtiza, for your Thank time. you. Forever grateful. And he has to rush. So, just on that note, Iram, and others, ये जो self doubt है ना, ये काफी हद तक, we'll hope and pray that once you're becoming a part of this, we're seeing the conversations open up as well. And feel free to discuss your ideas and share from people. And trust is a slow trajectory. It comes with time. It comes with realizing कि आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं, अगर आप उससे किसी से शेयर करेंगे तो वो बेहतर बन जाएगा. Yem was not Yem like this when it started off with. Again, the goal is the same. Whatever startup you're working on, it will always be the same, but people will come in and they will bring in new flavors to it, right? How the flavor that Zainab got 2 years back was different. The flavor that Musfira brought to Yem this year was different. The flavor that this year Zainab has again got is different. When Bilal was here, when Mazen was here, in the previous cohorts, it was all different. But then you guys are doing stuff which is again wowing all of them. So imagine the impact it is having on me, right? So that's like the trickle effect that's happening for everyone. So I hope this was useful. How did you guys find today's session? Blatantly honest, through I think what is it called? Brutally honest. So do share your feedback and do look up such organizations that are not led by, I would say, just profits, but they're also led by a lot of passion and a lot of realization कि इसका जो benefit हो रहा है वो किसी और तरह का impact है. So remember the curves that we are going to speak about. Zainab, you have anything to say? I think I just had to remind them about the task. So Yeah. first of all, guys, I'm just gonna take a moment to thank you all for submitting amazing work. Oh Uh, my God. brilliant. Like I think it was one of the best submissions that I've seen in my 2 years here. So it was Absolutely. amazing. Like I shared it with Mamnu and everyone saw and we loved it. So my point of appreciating you for this is to please, just keep it up because like we mentioned before, शुरू में ही हमने आप लोगों को बताया था कि everything that you do, it goes up on our website, on our socials, and it's not just for us to, put it up. It's for you guys कि अगर आगे you want to do an internship somewhere else, university, you can put up the links. I'm not even joking. मैंने जहाँ जहाँ apply किया है बाहर, and like I put up links of Mindworks, everything I've done here, the website. You can use all of that. So whatever you're sending into us, remember that this is a representation of you.
it's something that you can use aage jaake. So the next task that we have is actually my favorite because it involves a lot of, writing and literature. That's my kind of thing. So we've already posted it. Essentially, you guys just have to be divided into pairs. I didn't assign them. Normally, I would do that, but I want you guys to have that opportunity. If you have friends in the cohorts that you want to team up with, do that. Just make sure that you let us know which pairs are which. And then you guys have to work on basically an article. I've also sent in the guide, attached this example that Ma'am Noor shared with us. It was the Global Goals Organization of the UN that made the SDGs. Um, they published this, kind of this blog post. It was a bit short. We're going to make a longer version of it, which were 10 things that shaped our world in 2024. It's something similar. However, this time we're doing 11 events, products, or ideas that encourage social inclusivity in our world in 2025. I know we're still halfway through 2025, but insane kinds of things happened up till now. So take your time to research, choose whatever event, product, idea, or anything that you want to talk about. Make a very, very well written article because we're going to compile this into a digest. If you guys know what digest is, it's kind of like a shortened version of a magazine. We're going to compile that. And that is, again, going to go up on our website. And it's something that you guys can always hold on to. A written piece is something that you can use literally anywhere and it stays up over there as your identity. So I want you guys to research very, very well. Do not think you can just go on ChatGPT and ask it, to write your articles. We can figure out what is ChatGPT. I'm not saying that don't use it at all. Use it ethically. But this is genuinely, if you dig deeper into this, if you find the stories in Pakistan and even around the world, you can find insane kinds of things, just like Wall of Hope. If you want to write about Wall of Hope, that's fine as well. But obviously, not everyone can write about it. So do your research, let us know what you're writing on, and get started. I think this is one of the more relaxed tasks that you will have Yeah. compared to the other one. So you guys can also, take your time. And then obviously after this, we have the most exciting part of the fellowship, which is the business blueprint. We'll have a separate, I think, Ma'am Noor, like a separate briefing session for it. Ma'am Noor will explain the entire idea behind it and what we expect from you guys. That is, the big show in the end. So you guys still have a relaxed, few days with this task. Absolutely. And I'll just like to add on, just to give you guys some ideas. जो ये वाला जो basic task है ना, 10 things that um, shaped our world. A lot of thematic areas you're gonna see are very common. Um, and take for instance, just looking at the recent case of the actress who was dead for like 8 months. I mean, I can't tell you guys how much it has impacted me, being away from my family, and not being present in Pakistan, and just having a daughter. So you see, that's a very personal thing I'm also sharing with you guys. I just have one child, and she's 11. And I read the story, and I came back to her, and I was like, what if she's 18 and she goes away? And I was telling my husband, कि पता नहीं तुम जिंदा होगे मैं जिंदा होंगी, but I would want people to check up on me. um and that for me is maybe the impact of, and you can shape it in any way. If I was to shape it, I'd shape it like, God, what kind of mental trauma she must be going through? Right? That's an existential crisis for a lot of us, right? That's also to do with maybe a choice. Maybe we live in a society where women are not allowed or given the liberty to choose a career of choice. You can shape it in any way. If we look at the Noor Muqaddam case, or if we look at the TikToker girls case, or if we look at everything that's happening around us in terms of um, gender violence, I would say, and how it shapes our communities, you can talk about that. You can talk about how you and I will forget about this, 2 days, 3 days down the line, because we are so sensitized now, that our sensitivity is going
way beyond. You can speak about, unsafe tourism practices. That has really, really happened in the country. Right. Look at what has happened in the Sawat River. So pick up things which are really, really realistic, very, very basic, very, um I would say, at the surface level, and see how you can shape it into something that's really heartfelt, right? I want to It could be add something something on that you this. have had an impact on your own self also personally. Yeah. I'm so sorry for cutting off, ma'am. I just No, also no. want to mention, so hopefully, ma'am, Noor, you'll also allow this. I want you guys to be able to write about anything. If you feel it's controversial, I would want you guys to write about it. That is Yeah. exactly the kind of work we want. Like, um, recently, there were, I don't know if you guys know, but during the time जब ये India Pakistan का, kind of like the war that we were having, our country passed a couple of laws that I want you guys to research on this on your own, that totally go against our rights, like our human rights. Yeah. They Before that, actually, something that I was also personally involved with was, I don't know if you guys have heard, but there were some illegal canals that were going to be set up over the river of Sindh. And even though that didn't happen yet, imagine the kind of impact it would have had by now if they were constructed. We would literally Absolutely. not have water. Like, I don't think people understand that was something that was happening and we That had no idea. magnanimity. Yeah. So if you think it's controversial, if you think it's something nobody else is talking about, you talk about it. This is your place to talk about that. So I think, yeah. Also, like, I know, Bhumika is here, right? And she's from a minority community. And I would really, Bhumika, I would love, Hitika, you are also from a minority. I would really want you guys to speak about that aspect, right? Why? And this has always been a really, really conscious effort, that we would want that the minorities feel inclusive. Write about pieces, okay, that you feel you have seen happen around you. And I would love for Bhumika, Hitika, you both to perhaps, write about, let's look at lens from a minority's We point of had view. Carol write about that too, I think, last year. Carol wrote, yes, Carol Yeah. wrote about that exactly when you guys were in the cohort together. And we have always had a piece that has spoken about, how are we looking at minorities. I would love for Dua and Iram and Musfira, I keep telling her this, that speak about, uh, your journey as somebody who wears the hijab. I would love that you guys speak about, stereotypes, right? And how they have impacted you. I was speaking to Ma'am Mariam the other day, and she was like, if Dua and Iram and Musfira and any of the girls want to do like a live session, I'd love to, do like a live session, and she's happy to moderate that, because she wants to share those stereotypes and the journey that we've had कि हम इनको लेबल करते हैं ये मुलानी हो गई, बिलाल की दाढ़ी है तो वो मुलाना हो गया है, ठीक है, सो नाउ इफ ही इज लिसनिंग टू अ सॉन्ग तो ओ फल्ला ये तो काफिर हो गया, ये है ना, एग्जिस्ट करते हैं stereotypes. So we want to give you that safe space where you feel comfortable enough to talk about it. And you can do the same with body shaming. I have struggled with that my whole life. I was stick thin, maybe half of Zainab, and now, mashallah, mashallah, I am like 10 times or maybe 100 times into Zainab, right? So I have seen the spectrum of, body shaming throughout my life. And at 40, I wouldn't want that to carry on to any kind of, generational trauma to all of you, because you're all my babies now. So speak about, these things that are shaping the world and feel comfortable and open, right? Ye process hi sara ye hai. And if you want to be anonymous on it, if it's something, um, no worries, no Yeah, worries. we can write your name. Just speak about it. We have had Jangir from the previous cohort. 2023, I think. I think. Huh. But Speak about his
how do I phrase it? Speak about his um, journey and mental struggles with identity crisis. I Let's remember he was just very vocal about it too, and it was yeah. Let's just frame it at that. You are all smart to identify that, and that's also a topic that we were able to present in a way that it's comfortable for people to listen to. But somebody needs to have these conversations, you guys. So feel free to do that. I think that's about it. Not giving away too much on the creativity line for you guys, but feel free to think outside the box. all right. Thank you guys so much for joining, and inshallah, we will be seeing you in the next big show capacity building session very soon. Yeah, I hope that one will be a little longer one, and it's Yeah. gonna be in a workshop model. So make sure, inshallah, hopefully no rain, no internet outages, no nothing. But that's gonna be with some markers and some notes, and we'll try to make it as engaging as I can, because that's essentially your deep dive into all of your business ideas and just putting them into action. All of what we have been doing so far is to take you to that point where you have one idea that you are passionate about, that you want to work on, because the business blueprint has to arise from an idea. And Zana Musfira will also be as an attendee in that, so so that they can structure up their own business blueprint as well. So they wouldn't know what's coming up, and I'm not going to give any leaks before we go into that session. So that's about it. So thank you so much, everybody. Have a great Thank you weekend. guys. See you. Allah Hafiz. Okay, we are sticking around for a bit. Gonna- All right, you guys. Ouch. I needed to move my legs a bit. Okay. I think went well. I've stopped recording, have I? Pause, stop recording. Yeah, stop recording. Okay, let's